We have with us Kirti Mishra, and Kirti की मम्मी है साथ में. Kirti is from Kanpur and she has recently cleared the UP Judiciary exams 2023 and many congratulations. God bless you. और अब अपना जर्नी बताओ इनको, कैसे तुमने तैयारी की, कैसे स्टार्ट किया, पूरा बैकग्राउंड के साथ पूरी जर्नी बताओ. First of all, I would like to extend my congratulations to everyone who is sitting here. It is a matter of pride in itself to be a part of this institute. Honestly, sir, there are teachers who tell you what to study, and then there are teachers who tell you what to study and how to study, and they empower you for life by giving you that skill set. And so that's what happens when we join Rahul's IAS. And as far as my journey is concerned, it was very simple. After I did my LL.B and LL.M, I got to know from my seniors about this institute. I started attending my classes diligently. I made the notes. I referred to nothing. For the law subjects, I referred nothing but the notes and the barracks, nothing else. I simply relied on the guidance which was provided by Rahul sir, the other teachers, Krishna sir. For GKGS also, since it's very important in Uttar Pradesh, whatever Krishna sir told me, I diligently followed it. Sir, in our magazine, Current Affair magazine, there is this section for translation also, pressy writing also. I followed that only. Okay. And Sir Krishna sir had told me about this compilation of NCRTs. There's this book because sir, there was paucity of time. Due to some adverse circumstances, I got really less time for mains. So that ways I referred to that book, and everything else was the material which was provided by the coaching for GKGS. Which book are you talking about? So this is a book by Arihant. It is a compilation of all the NCRTs. Okay, Arihant. Ji sir. So that book I referred, and for few topics I referred Pratyogita Darpan for GKGS, and sir for law classes notes, nothing else, sir. Cases? Yes, sir. I used to. So we got compilation from the coaching itself, and live law also I used to refer. And I used to make a list of important cases, but from our coaching also we got that material. It was already well compiled, so it was very easy to revise from that. And tell us about your background. Where did you do your LL.B from, and then other family background? Yes, sir. So my father is a businessman, and my mother is a homemaker. And so I did my 11th, 12th, I chose PCB, biology. My parents wanted me to become a doctor. But then, sir, I was not interested in science. So somehow I just figured out that no, I want to do law. I spoke to some seniors and somehow, but then my parents also supported me. And then from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, from there I did my B.A.LL.B honors. When? Sir, I completed it in the year 2018. 18. Ji, sir. And after that, you came here. So then I did my LL.M from the West Bengal National University of Judicial Sciences, Kolkata. From there, I did my LL.M 2019, and then I came here, sir. So in September. Yes, and your course you started in 2019 September. Right, sir. And it may have got over in 2022, I believe. Yes, or sir. 21. 21. Yes, sir. Because of COVID, it had got delayed. The starting of 21, it got over. At that time, it used to be 18 months. Yes, but sir. then it took a lot of time because of COVID, no? Yes, sir. Okay. And और भी एग्जाम दिए तुमने? Sir, before this, I had given Haryana. So there I had given the interview, but I couldn't clear the interview, sir. So in the meantime, I had attempted prelims for Delhi also. So I had given prelims for MP also. That I did not clear. But then this time for Uttar Pradesh, it's my home state also. So here I cleared all the 3 stages. Tell us a bifurcation of your approach for the prelims and thereafter the mains. Okay, sir. Prelims ka pehle batao, what was your approach? So for prelims, I solved that book. I thoroughly focused on the barracks, each and every word. I solved O.P. Tripathi and Singhal's, the 3 volumes, and I took papers from the coaching. These are MCQs? Yes, sir. Singhal's and O.P. Tripathi are multiple choice questions? These are MCQs.
So these books are also suggested by Krishna sir. So I solved these books, and sir, I took test papers from the institute, subject wise also, sir, and of course we have the test series combined. So that I did, and I revised it. So the reading material for the prelims was basically the Bare Act. Yes, sir, Bare Act. And so for current affairs, GK GS part, sir, I referred to Lucent. And then for some topics, Pratyogita Darpan, our own magazine for current affairs. And so we have MCQs in our magazine also at the back. Those also I used to solve. But clarify one thing. Yes, sir. प्रीलिम्स के लिए आप कह रहे हो कि आपने बेयर एक्ट अच्छे से किया, जी सर. लेकिन बेयर एक्ट अच्छे से सिर्फ बेयर एक्ट करना पॉसिबल है या फिर No, पढ़ने sir. के So बाद when I say वो that, हाँ, that you clarify. I mean notes. So notes I'd already done, completed. That And is what I. Yes. I'm sorry, I skipped that. Means you studied the entire syllabus. Yes, sir. Yes, and sir. then you focused only on the Yes, Bare sir. Act. Then that is once I'd studied everything from the notes, I had done almost all my classes were over by then. So I had a good conceptual clarity. That was when I was able to understand the Bare Acts effectively. So Bare Act, how many days in the end before the prelims? So I remember once you had told us that 3 revisions are very important. So that ways I had made my timetable so that I'm able to revise it at least thrice. तो Bare Act तुमने मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले से शुरू कर दिया होगा ना? हाँ सर. और पहले तो पढ़ाई जब आप जैसे अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी तो आप कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हो, बेयर एक्ट भी पढ़ रहे हो. हाँ. तो वो इसने कर लिया था. जी सर. मतलब ये मत समझना कि सीधा बेयर एक्ट पे पाउंस कर गई not थी. at all, not वो at all. इसने कर लिया था, रिविजन्स कर लिए थे. जी उसके सर. बाद जब एग्जाम आया तब इसने बेयर एक्ट को फोकस करके, ये कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे ही, जी तो सर. बेयर एक्ट को फोकस करके 1-2 महीने पूरा सिर्फ बेयर एक्ट किया और एमसीक्यूज किए. सर हरियाणा मेंस क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हाँ. तो हरियाणा की प्रिपरेशन मेरी थी सर. हाँ. तो मेरे सारे नोट्स वगैरह और सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एवरीथिंग. और सर आपने हरियाणा के टाइम व्हेन आई वाज अटेंडिंग क्लासेस आपने इलेबोरेटली बताया था कि जल्दी से अपने नोट्स रिवाइज कर लो पीटी से पहले ही. तो सर दैट आई हैड ऑलरेडी डन. ये तो सर 1 मंथ पहले की स्ट्रैटेजी है कि बेयर एक्ट्स और ये MCQs और ये 3 रिविजन्स वाली बात सर. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हो सके ना तो प्रीलिम्स की तैयारी जब शुरू करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी जैसे मान लो एग्ज़ाम आपका अभी सितंबर है ना, एग्ज़ाम मान लो आपका नवंबर में है, तो आप सितंबर लास्ट में या मिड में आप एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की तैयारी में चले जाओगे. लेकिन उसके पहले कोशिश करो कि अपना जो मेंस का पूरा रिवीजन है वो 2 बार 3 बार जितनी बार कर सको करके रेडी रहो, तब जाके प्रीलिम्स पे फोकस करोगे. एक्सक्लूसिव बेयर एक्ट, एक्सक्लूसिव MCQs, then you will be able to clear the prelims also and later on the mains also. Yes sir. With her the plus point for UP was that she had taken the Haryana mains. Yes sir. So obviously and she was a good student studying regularly. तो हरियाणा मेंस के लिए चूंकि मेंस की पूरी तैयारी कर चुकी थी ये, और तब लास्ट में 1-1.5 महीने प्रीलिम्स के लिए किया तुमने. जी सर बिल्कुल. तो दैट मे हैव मेड प्रीलिम्स वेरी इजी फॉर हर. यस सर. है ना. लेकिन हरियाणा में तुमने जीके जीएस तो नहीं किया था. नहीं किया था वो सर. तो फिर इसके लिए करना पड़ा होगा सर. एंड द 9 एक्ट्स. हाँ, सब जो एक्स्ट्रा एक्ट्स जो थे. जी सर. तो वो सब तो करना पड़ा होगा जी सर. क्लासेस हुई थी सारे classes. एक्ट्स की, तो आई डिड दोस क्लासेस ऑनलाइन. तो प्रीलिम्स में ये था. पीटी के लिए और कुछ बताना चाहो अगर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? सर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कोच इंस्टीट्यूट से रेगुलर टेस्ट पेपर्स लीजिए और एनालाइज करिए वेर यू आर लैकिंग, कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस गलत. जैसे मेरे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो जाते थे, सो आई फोकस्ड ऑन दैट एरिया. दैट इज ट्रू. यस सर. और बेसिकली आई थिंक मतलब बार बार टेस्ट पेपर देने का एक फ़ायदा और होता है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं. जैसे आप कह रहे हो कि आपके केसलेस वाला पार्ट वीक था, किसी का सेक्शन नंबर का पार्ट वीक होगा, किसी का बेयर एक्ट लैंग्वेज वाला पार्ट वीक होगा. तो बार बार टेस्ट पेपर देने से यू कम टू रियलाइज एंड देन यू कैन वर्क अपॉन दैट एरिया. ठीक है. और मेंस के लिए कैसे किया तुमने? मेंस में टाइम कितना था? सर एक्चुअली घर पे कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो गए, तो 1 मंथ और 10 डेज अराउंड इतना टाइम मिला. बट सर इसमें मेरी पहले की प्रिपरेशन बहुत काम आई सर, जो पहले की थी. और सर वहाँ पे पेपर देखा तो उसमें इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, रेस जुडिकेटा, ऑर्डर 2 रूल 2,
एंड देन सर दिस डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, सर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे. तो सर वो तो मेरे लिए एकदम केक वॉक था, इतना ईजी था बिकॉज आपने इतना अच्छे से वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे क्लास में. तो सर इवन दो आई हैड नॉट रिवाइज दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड I could easily write all the answers. What was the adverse circumstance? सर एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी उस टाइम, तो फॉर अ गुड नंबर ऑफ डेज ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई वॉज विद हिम, आवर एंटायर फैमिली. Now he's fine. Yes sir, now he's fine. चलो. So that ways I couldn't give entire. After February I wrote my prelims, and after that I could formally start. I started formally preparing for mains only in April. Okay. ठीक So, है. so that is one suggestion which I want to give to everyone कि don't waste time. When the circumstances are in your favor, please utilize that time and do your classes diligently, because here also you people are preparing. So इससे better classes से better preparation कहीं नहीं हो सकती. That is true. And yours was mostly online, no? जी sir. Because I remember March में कोविड आ गया था और 5 मार्च 2020 को हमारी छुट्टी हुई थी होली के लिए. हाँ सर. तो होली में सारे बच्चे गए. दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ सिचुएशन. हुआ क्या कि हमारे उस समय तक कोविड चाइना में था, हमारे यहाँ नहीं था. नोएडा में 1-2 केसेस आए थे. तो हमारी छुट्टी हुई 5 मार्च को और बच्चे अपने अपने घर छुट्टियों में चले गए और कोई बुक्स लेके नहीं गया. थोड़े बहुत 1-2 किताबें ले गए कि अब तो आना ही है, 11-12 को वापस आना है. और इस बीच में कोविड बहुत बुरा हाल हो गया और फिर हमने क्लासेस बंद कर दिए. और 20 तारीख के आसपास लॉकडाउन का सिचुएशन हो गया. 23 या 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था. तो जो बच्चे घर गए थे होली की छुट्टी में, किताबें नहीं ले गए थे, वो फंस गए थे. तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि ऐसा ही हुआ था. मतलब कई बच्चे, मोस्ट ऑफ देम दे वर ऑल स्टक अप. अब कोविड लॉकडाउन है तो आएंगे कैसे? तो 2-3 महीने तो उनके पास किताबें ही नहीं थी पढ़ने के लिए. They were not having anything to study. So that was a very strange kind of a situation. सर उस टाइम में आप जो हम लोगों को वीडियो मैसेजेस भेजते थे सर, उससे इतना मोटिवेशन मिलता था कि वॉच देम ऑन रिपीट. I used to make video messages on my mobile and that I used to send to them just to keep them aloft, keep them motivated. Yes sir. है ना? Yes sir. ठीक है. तो मेंस के लिए तुमने वो जो लोकल एक्ट्स हैं उसके लिए क्या? सर नीरज सर की क्लासेस हुई थी, सारी क्लासेस अटेंड की थी सर. और सर B.A.LL एक्ट भी पढ़ा था. और सर पास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व किया था, एनालाइज किया था. बट सर जैसे बाकी बच्चे रेफर करते हैं बुक्स वगैरह, कोई अदरवाइज आई डिड नॉट. नो सर, आई डिड नॉट रेफर एनी बुक. And mostly it was B.A.LL Act oriented only. B.A.LL Act and sir the classes. Classes obviously. और हमने तो इस बार वो नए वाले पूरे का क्लास कराया जी था. सर पूरे का क्लास कराया. तुमने पूरा कर लिया? पूरा किया था सर. ठीक है. और जीएस के लिए, मेंस के लिए? सर जीएस मेंस के लिए वही अरिहंत एनसीईआरटी का कंपाइलेशन जो कृष्णा सर ने सजेस्ट किया था. और सर ये अपनी मैगज़ीन करंट अफेयर्स वाली उसको रेफ़र किया था सर. कुछ टॉपिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण को रेफ़र किया था. ठीक है. कुछ टॉपिक्स का क्या मतलब हुआ? कुछ टॉपिक्स सर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सर वहाँ पे जैसे कभी कभी प्रतियोगिता दर्पण में वी गेट रियली नाइस आर्टिकल्स. सो आई यूज्ड टू फ्लिप थ्रू द मैगजीन एंड इफ आई फाउंड एनी नाइस आर्टिकल, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो दैट आई यूज्ड टू नोट इन माई डायरी फ्रॉम दैट मैगजीन. फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू G20. So means important topics you used to note down and then Yes, on sir. them you are working and Yes, sir. writing points. Yes sir. ठीक है. इंग्लिश हिंदी के लिए? सर अगेन हमारी जो मैगज़ीन है उसके पीछे आई यूज़ टू रीड दी एसेज. उसमें इंग्लिश ऐसे भी होता है, हिंदी भी. एंड सर प्रेसे राइटिंग ऑल्सो इट इज़ देयर, ट्रांसलेशन ऑल्सो. सो दैट्स इट. So you did that much only? Yes sir. ठीक So बाकी sir I keep reading newspaper and all, and in general I have interest in reading books. So that way sir language was not a Fine. difficult area. हिंदी was also okay? Yes sir, Hindi was also. चलो ठीक है. अब लॉ का बताओ. लॉ में तुमने क्या रेफर किया मेंस के लिए? So just my notes and क्लास नोट्स? yes sir, class notes whatever. I had done all my subjects by the time I was writing the exam for Uttar Pradesh. So my class notes were complete
And so Bear Act, as is taught by all the teachers, as is taught by you, I kept referring it to it side by side. Any books or guide or something? So nothing. So past year questions I had seen. Past year Yes, questions you sir. did. That list I had made. That And- these all topics have been asked in past year. And answer writing? Sir, answer writing I used to practice. So now this time, since there was very less time and Krishna sir had made a timetable for me, so ऐसा होता था कि सर ने अगर 7 दिन का टारगेट दिया है तो मे बी आई एम टेकिंग 10 days or 12 days, but I used to complete it. किस तरह का टारगेट देता है वो? सर जैसे सब्जेक्ट दे दिया CPC, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बार CPC कर चुके हो, तो सर विल गिव यू टाइम 15 days. And if you've done it multiple times, maybe he'll give you just 10 days, 7 days. And then he'll ask you to attempt a prelims ka paper, then mains. That way he उससे gives फोकस्ड targets. हो जाता ना इंसान. जी सर. एक तो पहली बात तो आपको उस पर विश्वास है कि नहीं. तो इफ़ यू हैव ट्रस्ट अपॉन हिम, यू गो टू हिम एंड ही गिव्स यू अ टारगेट कि 10 दिन में चलो. अब वो भी इंसान देख के टारगेट देता है, मतलब उसको पता है कि यू कैन डू इट, तो तुमको हो सकता है 7 ही दिन का टारगेट दे दे. यस सर. उसको पता है कि ये नहीं करने वाला तो वो 10 दिन का टारगेट देगा, 12 दिन का टारगेट देगा. तो लेकिन वो अपनी तरफ से सिंसियरली आपको टारगेट दे देता है. मतलब ही इज़ वेरी सिंसियर इन गिविंग द टारगेट. इट इज़ अप टू यू वेदर यू आर Yes, sir. फुलफिलिंग इट और नॉट. जी सर. उसके बाद बुलाएगा आपको और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेगा, चेक करवाएगा. चेकिंग में जैसा भी फीडबैक आया वो आपको बता देगा. एंड देन अगर आपका अच्छा फीडबैक नहीं आया तो फिर एनकरेज भी करेगा हाँ. कि नहीं तुम कर लोगी, मेहनत करो, कर लोगी, अगली बार अच्छा करके दिखाना, है ना. हाँ सर. तो दैट मोटिवेशन ऑल्सो ही गिव्स. सो दैट इज हाउ ही प्रोसीड्स. और उस प्रोसेस में आपका पूरा सिलेबस तैयार करा देता है. तो इट इज Constant क्लासरूम, motivation, sir. इट इज क्लासरूम थिंग हियर एंड इंडिविजुअल पर्सनलाइज थिंग देयर. Yes. दैट बिकम्स अ गुड कॉम्बिनेशन. यस है ना? सर. यस यही सर. हुआ होगा तुम्हारे साथ? डेफिनेटली 100% सर. ठीक है. और उसके अलावा और कुछ तुमने रेफर नहीं किया? आंसर राइटिंग किया और नोट्स और बेयर एक्ट और केस लॉज के लिए कुछ? सर वी यूज टू गेट द मैगजीन. सर हार्ड कॉपी मिलती थी. सर घर पे भी आई है बाय पोस्ट हार्ड बाय कॉपी. पोस्ट किया है. सर और बाकी सर ऐप पे भी अपलोड हो जाते हैं अभी. तो जस्ट दैट एंड लाइव लॉ. लाइव लॉ आई यूज टू देखा रेफर. यस सर. तो यू हैड द लिस्ट ऑफ लेटेस्ट केसेस Yes, विद sir. यू? याद था उतना? सर आई वुड से कि लैंडमार्क केसेस पे लास्ट में जो टाइम था, आई फोकस्ड मोर ऑन द लैंडमार्क केसेस कि ये याद हो जाए अच्छे से. एटलीस्ट आई एम एबल टू राइट देम इन माई आंसर्स. ठीक है. सो फिर रीसेंट केसेस इंटरव्यू से पहले इनको अच्छे से देखा था पूरा और लिस्ट. पैटर्न ऑफ आंसर्स क्या था आपका? सर एग्जैक्टली जैसा आप बताते हैं कि जैसे थ्योरेटिकल और इशू बेस्ड का सर अलग अलग पैटर्न होता है, तो वही सर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो मस्ट है. और सर उसके बाद वही सर जैसे इंट्रोडक्शन में ही कोशिश की कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस लिख दिया, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिख दिया. उसके बाद सर मेन बॉडी एग्जैक्टली व्हाट इज़ आस्क्ड, द लॉ पॉइंट, और फिर एंड में कंक्लूजन. और सर इशू वाले आंसर्स में आई इंश्योर्ड कि इशू प्रॉपर अलग से, और जैसे आप बताते हैं कि एकदम इट शुड बी ऑन पॉइंट. एप्लीकेशन बेस्ड Yes, क्वेश्चंस. sir. सर इस बार थे भी इतने सारे क्वेश्चंस व्हिच वर एप्लीकेशन बेस्ड इन यूपी. अच्छा. तो सर दिस रियली हेल्प. तो सर आई हैव अ फीलिंग कि मेरा निकला है एग्ज़ाम तो उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से निकला. तुम्हारा पेपर में कुछ गड़बड़ी हुआ था? कहीं पे कुछ क्वेश्चन छूटा था या ऐसा कुछ हुआ था? सर मेरा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूटा था. उसमें सर लॉ पेपर 1 में सब्सटैंटिव लॉ में इट वाज रिलेटेड समथिंग अबाउट मुस्लिम लॉ, तो सर वो छूटा था. And in that process of preparing, now you joined here in 2019. जी सर. So by 2021 you were over with the course, 21. Yes, sir. And thereafter it took 2 more years. Yes sir. You took Haryana, you could not clear the interview. So you went up till interview and could not clear. तो कहीं frustration? Yes sir. तो क्या करती थी? सर मेरी यंगर सिस्टर है और मेरे 1-2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. माई मदर, माई पेरेंट्स, इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया सर. इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट आई कंटिन्यूड विद माई प्रिपरेशन. And you are from a business family. यस सर. Law का कोई नहीं है? कोई नहीं है सर. सर मेरी मदर को हमेशा से था कि माई डॉटर, सर वी आर 3 sisters. So my mother always dreamt for us, even my father, but mother has been we can say a stronger support. So she always wanted us to do something really good, to dream high.
So छोटे थे हम लोग तो she used to call the toppers. आता था वो न्यूज़पेपर में कि टॉपर से बात करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें. We were really young. So since then, she used to encourage us. She used to encourage us to read GK Today and I don't know these kind of websites since we were really young. So that way, sir, she has been a constant support. Your sister, her sister is also studying here Yes, sir. right now. तो ठीक है, सब हो गया. अब इंटरव्यू का बता दो. इंटरव्यू, हाउ इट वेंट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैड आस्क्ड यू. So as soon as I entered, I just prayed for a minute before entering, just as my mother had taught me. And then sir, जैसे ही enter किया तो गोमा मैम ने बताया था you have to bow a little and wish them. I did that. So this time I was very composed. I was not at all scared. I thought I'll face whatever they ask. I'll answer confidently. I sat down very comfortably, and the board was also very cooperative, very friendly. And then they asked me, the honorable person asked me, what have you been doing since 2019? You did your LL.M in 2019. Then I told him confidently, ki, sir, I have been preparing. And then there was a question on my hobbies, that what are your hobbies? I told him about that. And then he asked me a situation-based question that nowadays female judges have to face so much in the court. What if someone comes to your court and misbehaves with you? What will you do in that kind of a situation? So to this I answered, sir. And then I believe he was satisfied. And then the other person started asking questions. He asked me on will, how to prove a will. He asked me this question. I answered this question, but sir, I think he was not that satisfied with my answer, and he told me to read on it more. I said, okay, sir, I'll definitely read. And then, sir, he asked me on my dissertation topic. I told him about that. He asked me about my major findings. That I told. And then he asked me another question, that will a stick be included in weapon? That's it. And so then they asked me to go. तो हो गया. जी सर. और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ? No sir, I don't think नहीं. so. और प्रोसीजरल लॉ पे, No, sir, एक्सेप्टिंग दैट वेपन थिंग एंड ऑल? No, Nothing. sir, they didn't ask. So that day, they were discussing amongst themselves that they had to get done with the interviews quickly. So how maybe that shorter is- duration yes, they sir. were taking. Everybody's interview was going on for 10-15 minutes 10-15 maximum. minutes. And you were wearing a sari? Yes, sir. Yes, sir. Same sari? Yes, sir. She was wearing the same sari there. That is great. And anything else that you would like to tell them? Something to motivate or whatever? I just want to tell you all that if there's anybody whom you all can follow blindly, it is Rahul sir and all the teachers over here. Do not get swayed by anything at all. You don't need any other guidance. Now that you've come here, you've come to the best place. I can vouch that this is the best institute for judiciary in the entire country. And don't waste time, because this time, if I was able to clear Uttar Pradesh, it is only because I had prepared well in advance various subjects, CPC, CRPC, evidence, etc. Because I was left with very little time, and had I kept everything for the last moment, it wouldn't have been possible. So please don't waste time. Don't take good times for granted. And yes, that's it. Nothing much, sir. And one small thing, the reason for not getting selected in Haryana, did you ponder upon that? Yes, sir. कहाँ पे कमी रह गई थी? So इंटरव्यू में कैसे मार्क्स आए थे? So I did not score good in the You interview. did not get well. And mains में? So mains mein I scored 474 or 475 something, and the cutoff was 450. Okay. So sir, it was okay. The main score was okay, not very good, I believe. So sir, I worked on answer writing. This time I ensured that the pattern which you tell, that and sir, one more thing, that in few answers, wherever possible, I ensured, sir, just like you tell, that you should write the name of the judgment, and the judgment was delivered by this 5 judge bench judge's name, and the name of the justice. So that you that have also written. I did. So I think that must have helped me. That adds on to your Yes, marks, sir. no? That adds These on. little things I tried to include this time.
ठीक है. I'm just eager to know your interview marks in UP. Yes, sir. Let's see what marks you get. Sir, yes, sir. एंड हरियाणा में मतलब मेनली राइटिंग का ही पार्ट था जो इम्प्रूव करना पड़ा. Yes, sir. Interview के लिए I discussed with Krishna sir कि sir where should I improve? He first of all encouraged me that don't be disheartened. It's okay. Obviously. Yes, sir. Then sir, this time my younger sister, she practiced a lot with me. I used to keep practicing mock interviews, and then obviously sir, the final mock interview which I gave here at the institute. So from there I got a really good feedback this time. ठीक है. Last time before Haryana, I got scolding also from the panel from Manu. That don't. I was trying to, I was trying to explain every topic. So Who scolded? sir, Honorable Justice. अच्छा, there in the board. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा. He said, "Don't explain. Just give short answers." So that I remembered this time. I gave इंटरव्यू short में आपको answers. ब्रीफ आंसर्स देना होता है. Yes, sir. मतलब you are not writing an answer there, no? So they have got one question, they put the question, give a brief answer, and if they want to know more, they will ask you further questions, and then you go ahead with the next question, and that way it Yes. goes. मम्मी कुछ बोलेंगी? जी, आपकी कोचिंग के सभी टीचरों को बहुत ही अच्छा, मतलब एक सहयोग जो है वो बहुत ही अच्छा रहा. मानसिक तौर पे भी बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने, और टीचिंग तो ही है. थैंक यू सो मच. ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल. ये प्लांट है आपके लिए, इसको लगाइएगा घर में. ये पकड़ो. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. बहुत बहुत बधाई हो और आगे अच्छा करें लाइफ में. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस.